Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Introduction to Bioinformatics class. This is our lab session 14. Okay, we have started a lecture on phylogenetic analysis, and then we have started learning in R language. We have done some simple programs in R, and also we have done phylogenetic analysis in our program. Okay, this is another exercise uh, which is related to phylogenetic analysis. We have done some algorithms, distance-based algorithms, which are UPGMA and neighbor joining algorithms, which work uh, on the basis of distance-based. And there is another algorithm, maximum parsimony algorithms and maximum likelihood algorithm for phylogenies. These two algorithms are based on character based algorithms and distance based algorithms having UPGMA and neighbor joining algorithms. So this is the difference between in these different algorithms. So let's start our work. First of all, we should see what is this exercise about. Uh, this is a work done by this Imperial College of London. We will just try to implement or implement the instruction, implement the uh, programs they have done for phylogenetics analysis. Okay, let's start with it. Okay, first of all, we see in their abstract what they have done. This is the practical work of phylogenetic reconstruction. Uh, they have this they have done this phylogenetic reconstruction or phylogenetic trees in our program, and they tried to learn what are the methods like distance-based methods and parsimony and etc. They have tried all these approaches to program on the R language. So afterwards, three main classes of phylogenetic methods are introduced, namely distance-based, maximum parsimony, and maximum likelihood method. They have also tested a molecular clock for some particular data set. Okay, ओके जो इन्होंने मेथड्स जो इन्होंने डेटा सेट यूज किया है और मेथड्स यूज किया है methods are illustrated using a small data set. इन्होंने जो small data set यूज किया है वो that is seasonal influenza का data set जो है इन्होंने यूज किया है. That is a sample from USA and data set is और उनका जो year है that is 1993 to 2008. Okay, this is they have explained about distance-based methods, maximum parsimony, and likelihood methods. So, for example, we will just focus on this distance-based method. They have this distance-based method. What it does, compute a matrix of pairwise genetic distance. Uh, distance between the studied taxa जो taxas है उनके दरमियान पेयर वाइज डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है उसको समराइज करता है एंड hierarchical या clustering की फॉर्म में उसे प्रोड्यूस करता है that is of an algorithm you have already done UPGMA and neighbor joining algorithm. So what is the advantage of distance based methods are these are the fast flexible but they are having heuristics approach. uh, heuristic approach that means that if there is a huge data set then there may be chances of errors, so you can see in limitations no model comparison um, may be inaccurate and highly dependent on the distance and clustering algorithm chosen. ओके ये जो phylogenetic analysis का प्रॉब्लम थी इसके लिए जो है बेशुमार जो है algorithms पर काम किया गया था और
जिस तरह की जरूरत थी तब उस तरह के अकॉर्डिंगली जो था डेवलपर्स ने इन एल्गोरिथम्स पर काम किया था। जैसे कि यूपीजीए में जो है वो आपको रूटेड ट्री जो है कंस्ट्रक्ट करके देता है और नेबर जॉइनिंग जो है वो अनरूटेड करके देता है, बट स्टिल दे आर फास्टली जो ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, बट अगर डेटा बहुत ज़्यादा है या उसमें एरर के चांसेस होते हैं, बट स्टिल दे डेवलपर्स हैव इम्प्रूव्ड most of the algorithm. इसी तरह से parsimony algorithm है, that is based on character based algorithm. So we have already studied all about them in our lecture, so we will just start our work from practical. Okay, what we have to do first, we have to install some packages. Okay, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि this practical work requires some packages like stats will implement basic hierarchical clustering routines. Aid and AidGenet, what it will do are here used especially for graphics. Aid जो है वो आपका सबसे core पैकेज है phylogenetics का, जो आपके phylogenetic evolutionary construction करता है. Fangorn क्या करता है, implement parsimony and likelihood algorithms. So these are the packages. If you want to do parsimony and likelihood, you need this Fangorn. Okay, first of all, you have to install these packages as they have discussed in this above paragraph. You have to install these packages in your R language. I have already installed them. Just run these commands to install these packages. Then load the packages. To work on this uh, phylogenetic analysis. Okay. This is what we are just loading the packages, and this is Fangorn. Okay, this is all about packages. Now come towards the dataset. Dataset जो है इन्होंने इस जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में इस पर्टिकुलर ग्रुप ने जो काम किया है वो है डेटा सेट दिस सीक्वेंस ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा. ठीक है, यू कैन जस्ट टाइप दिस gene name on gene bank. Okay, you can just extract the data from gene bank, or you can use the nucleotide database and just find out this one. But and afterwards they have aligned similar sequences while using this cluster W. They have used this alignment approach, and they have selected 80 isolates genotype. That means इन्होंने 80 different sequences को choose किया है for this particular gene sequence और segment. Sample in the US में की sampling है, और इन्होंने 1993 का से लेकर 2008 तक का डेटा जो है इस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है. द डेटा सेट कंसिस्ट ऑफ 2 फाइल्स हैं, जिसमें आपकी एक सीक्वेंस फाइल है और एक एनोटेटेड फाइल है. ठीक है, यू कैन जस्ट ओपन दिस, you can just open it on Google. You will find it out. Okay, students, जो ये वाला डीएनए सीक्वेंस का ये इनका डीएनए सीक्वेंस है जो इन्होंने 80 डिफरेंट आइसोलेट्स सैंपल्स यू कैन से ऑफ सीजनल इन्फ्लुएंजा का डेटा सेट इस यूआरएल में यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, और एनोटेटेड फॉर्म में भी यू कैन डाउनलोड इट. ओके, फॉर जो डीएनए सीक्वेंस है उसको हम देखते हैं. दिस इज द डीएनए सीक्वेंस
और ये उसका एक्सेशन नंबर है, दिस इज द फास्टा सीक्वेंस, और these are all about 80 डिफरेंट सीक्वेंसेस जिस पर ये फाइलोजेनेटिक एनालिसिस का हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये उनका एक्सेशन नंबर है। और इसके अलावा ये आपके पास एनोटेटेड डेटा है, यू कैन जस्ट paste it in the Google and you will automatically download it in your PC. You can just view this data set, or afterwards this is your data, and then read this file with this command, और उसके बाद आप डेटा सेट पर जो है उसकी एनोटेशन कर सकते हैं, लाइक दिस इज डीएनए के अंदर कितने सैंपल्स हैं, 80 डीएनए सीक्वेंसेस हैं, और हर डीएनए सीक्वेंस की हर सीक्वेंस की जो लेंथ है वो 1701 है, और बेस कंपोजिशन जो है वो HCGT है। क्लास डीएनए में जो डीएनए की क्लास है और उसके अंदर ये अब आप इसको now you can represent sequence are stored as DNA bin ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपके सीक्वेंसेस है वो सेव हो जाते हैं, और इसके बाद फॉर इंस्टेंस द फर्स्ट 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द फर्स्ट आइसोलेट, ये आपके पास 80 सीक्वेंसेस है, बट ये फर्स्ट 10 सीक्वेंसेस के आइसोलेट्स हैं, सैंपल्स हैं। ठीक है, इसको हम फर्दर ऑन जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें है क्या। ओके, फिर इसके बाद है दिस इज योर कोऑर्डिनेट, आप okay are actually coded as bytes. This is converted into ASCII codes, and then um, this is a significant saving in terms of memory required. इस रिजल्ट से आप क्या करते हैं कि आपकी जो सैंपल्स हैं या डेटा सेट है वो आपका एक पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में जो है वो उसको आप सेव करवा रहे हैं, एंड देन the annotation file is read in R. अब जो आपकी annotated file है which is this one, this is annotated file, और इसको आप इस कमांड के साथ रीड करवाते हैं, एंड दिस इज द एक्सेशन नंबर, और हर एक्सेशन का जो ईयर है और उसकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है या फर्दर डिटेल्स वो आप इसमें देख सकते हैं। You can see this is a second file जिसमें जो annotated file है ये आपके number of sequences है, this is the accession number of sequences year wise, और उसकी further information है। Okay, now you can just use this command to check what is in it in this data. 80 number of data है, और हर sequence की जो length है वो 1701 है, और आगे चलते जाएं तो हम इसके बारे में इसका टेबल आप व्यू कर सकते हैं, और हर ईयर में एक ही टाइप ऑफ डेटा है, जिसमें 1993 की बात अगर करें तो उसमें 5 सीक्वेंसेस है, सो फॉर एवरी ईयर देयर आर 5 सैंपल्स पर ईयर। इसके बाद आप जेनेटिक डिस्टेंसेस जो है वो कंप्यूट करते हैं विद दिस कमांड डीएनए डिस्ट डॉट डीएनए, और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डी है, और इसकी आप लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज़ 3160। उसके बाद आप इसका पेयर वाइज डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और नेक्स्ट आप ये ग्राफ देख रहे हैं जिसमें जो है ये सैंपल डेटा है जिसको उन्होंने कैलकुलेट किया है, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, और डार्कर शेड्स जो है ऑफ ग्रे रिप्रेजेंट्स ग्रेटर डिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद आप ये कमांड्स रन करने के बाद व्हाट यू विल सी आपके पास इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, इसके बाद
अच्छा, अब इसी ग्राफ को आप लेजेंड्स के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं. Since the data are roughly ordered by year, we can already see some genetic structure appearing, but this admittedly not the same satisfying or informative approach. आपको यहाँ पर कुछ एक ग्राफ तो नजर आ रहा है और आपको जो है वो डेटा बहुत scattered वे में नजर आ रहा है. This is the distance based calculated graph, but you have to present the um, like in a phylogenetic tree. इसी डेटा सेट को आप क्या करेंगे यूज करके, और बिल्डिंग आप ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें आपके पास जो है नेबर जॉइनिंग का पैकेज आपको मिलेगा एप के पैकेज में, और दैट इज द क्लासिकल नेबर जॉइनिंग एल्गोरिथम. फिर उसके बाद आता है दिस एल्गोरिथम बायो इन विच इज comes from ape. Ape is the core part of the phylogenetic का जो core पैकेज है वो ape है. That is an improved version of neighbor joining. फिर उसके बाद मैक्सिमम एवोल्यूशनल एल्गोरिथम है, उसके लिए आपकी ये कमांड्स हैं. स्टैट्स के लिए क्लासिकल हायरार्किकल क्लस्टरिंग जो है वो कंप्लीट लिंकेज यूपीजीएम एंड अदर्स, वो आपके इस कमांड से होंगी. ठीक है. इसके बाद ये आप सिंपल इन कमांड्स को रन करके आप सिंपल नेबर जॉइनिंग ट्री जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं. इसके बाद प्लॉटिंग ट्री आप सेम डाटा सेट के साथ डिफरेंट एल्गोरिथम्स के साथ जो है वो ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. दिस इज अनरूटेड नेबर जॉइनिंग. Okay, and afterward you can just annotate this data, what kind of this data is. उसके बाद this is rooted neighbor joining tree. और अच्छा, जो most of the people or most of the researchers are having a focus to calculate the molecular clock. Molecular clock क्या होती है? जो phylogeny में हम evolutionary time calculate कर रहे होते हैं root से उसके descendant तक का time calculate करते हैं. तो उसके लिए हम rooted trees are also useful for accessing the rate of evolution of a given gene. We call molecular clock the accumulation of mutations over time. अच्छा, आप कितने ओवर टाइम में कितनी म्यूटेशन हुई है वो आपको पता चल रहा है, और किस ईयर में कितनी म्यूटेशंस हुई है. ठीक है. ये 5, 10 और 15 ईयर्स में आपको पता चलता है कि कितनी म्यूटेशंस हुई है, क्योंकि इन्होंने 1993 से लेकर 2008 तक का डेटा सेट यूज किया था. तो 5 years, 10 years, 15 years में they have calculated the molecular clock, or you can say evolutionary behavior, evolutionary change they have calculated in this molecular clock. ठीक है. इसी तरह से आप बाकी भी जो है पार्सिमनी और लाइक्लीहुड और यूपीजीएम ट्री है ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. तो यू हैव दीज डिफरेंट कमांड्स or instructions. You can draw such fancy or attractive type of trees or graphs. So let's start with it. We have installed the packages and loaded the required packages. Now we have data set. We'll just try to do it as fast as we can, as we have already know what are these uh, commands are functioning. Just try to run it. Okay. इस कमांड में आप क्या कर रहे हैं कि जो फास्टेस्ट अलाइनमेंट है उसको आप डीएनए बिन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. उसका सिंगल जीनोम का कितना साइज है और उसकी कितनी लाइंस है. एंड आफ्टरवर्ड्स यू कैन जस्ट see what is in DNA. DNA has a base combination ACGT, और ये उनके लेबल्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, उनके एक्सेशन नंबर्स हैं. इसके बाद क्लास DNA, व्हाट इज क्लास DNA? And this is representation of DNA sequence using bytes to code nucleotides.
Okay, afterward, actually coded as row bytes. ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ सीक्वेंसेस हैं और ये आपके सैम्पल्स हैं एंड टाइप एंड क्लास डीएनए. Now significant saving in terms of memory required. इसके लिए इसको कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है? दिस इज 7.7 बाइट्स. Now you have to read the annotated file, which is this one. Okay, आपका जब दो लाइंस पर इंस्ट्रक्शन जो है वो आ रही होती है तो यू कैन जस्ट यूज प्लस साइन single time, one time. Then this had annotated as it is readable in the, you can just reading the file of annotated file what we have seen in this Excel file. Okay, now you can check how many samples and how many samples are there. 80 और हर sample sequence के अंदर आपका जो length है वो that is 1701. इसके बाद you can just try out these instructions. Now you can just print the table with annotated years. ये आपके पास years है और हर year के का जो sample है वो that is number 5. Now you can check. Now you have to compute the genetic distances while using this dist.dna. Class D. हमारा जो एल्गोरिथम था लेंथ इसकी है आपके पास 3160. Now print the table. After printing this, now this is your graph. You have just calculated the distance of this data. यहाँ पे जो darker shaded regions है, they are just telling that they have the maximum distance. So this is the raw data. We cannot figure out what we want to see in it. Darker shades of gray represent greater distance. Note that the image to produce similar plots, data need to be transformed first. हमें इसको transform करना है matrix में. And image
I have to delete this single plus. This is another graph. We're just trying to transform the data set in a matrix. This is the graph. Now you can see that this data are roughly ordered by year. This ordered by year, we can already see some genetic structure. इसमें हम genetic structure को तो देख सकते हैं. There is some clustering. इस region में cluster होगा. Yellow में different clusters हैं और white regions में different clusters हैं. We can okay, but this is admittedly not the most satisfying or informative approach. We cannot give much information from this. We have to construct the additional relation between isolates. Now these are the different packages or approaches you can just try out to build your building of your tree. Now this is tree class tree फाइलो है और नाउ आपका ट्री किस तरह का होना चाहिए, लेडराइज टाइप होना चाहिए एंड दिस ट्री ओके. ट्री जो है वो आपका फाइलोजेनेटिक ट्री विद 80 टिप्स एंड 78 इंटरनल नोड्स. आपकी टिप्स जो है वो 80 है और 78 इंटरनल नोड्स हैं. टिप्स की जो लेबलिंग है वो आपकी ये एक सेशन नंबर्स है और ट्री जो है वो अननोटेड है. Okay, now you just plot this tree. This is your tree. You can just give a title to it, a simple neighbor joining tree. You can just change your title whatever you want to give. Neighbor joining trees. Okay, so this is a simple neighbor joining tree. Okay, now plot some more trees. Unnoted tree. We are just removing the tips. Then give a title. Unnoted tree. Unnoted neighbor joining tree. And now you just label the tips. You will see some change. टिप्स को आपने लेबल कर दिया कि कौन सी ये का कौन सी टिप है. Okay, after that this is more annotations. (1993) to 2008 and 5 each. Legend. What are legend? Legend is basically the key what you are showing in your graph. This is the legend. आपको रेड में 1990 का डेटा सेट मिलेगा. ये दिस मस्टर्ड कलर इज 1995. 2000 में आपको ग्रीन कलर्स मिलेंगे. डार्क ग्रीन जो है वो 2005 के हैं और 2010 में आपके ब्लू क्लस्टर्स हैं. ओके, after that again we are going to make another tree. Remove the tips. This is an unnoted tree. Show tip first. Okay, now give the title.
Unnoted neighbor joining tree. Label the tips. Now you can see. Now you give the legends, annotation, कौन से ईयर का कौन सा डेटा है, और लेडराइज आपका ट्री कंस्ट्रक्ट होगा. Now what we can do this, rooted trees are useful for assessing the rate of evolution of a given gene. Rooted tree में जो आप rate of evolution है, जो change आया है उसको आप calculate कर सकते हैं. That is molecular clock. Now we will construct this molecular clock. Delete this one plus sign because it is not a requirement. This is a plot of molecular clock. Then you can just summarize it. It's drawing as line, blue line, while joining the points. It is working. Okay, now you can see this call formula, जिसमें आपके जो रेजिड्यूल्स हैं मिनिमम एंड मीडियन एंड मैक्सिमम. मिनिमम -12 है आपके पास, और मैक्सिमम जो है वो 13 है. ठीक है, और एस्टिमेटेड रेट है. बेसिकली आप इसमें क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? Okay, you have a data, you can say something is missing here. So coefficients. ये आपकी ये रूट है. Now your tree be like, now your molecular clock be like years from the root. This is your horizontal captions, mutations from the root. एक्स एक्सिस पे आपके पास years जो है वो डिफाइन किया हुआ है. 15 years के डेटा सेट है, यानी कि 1993 से लेकर जो 2008 तक का डेटा सेट था वो ये था. ठीक है, इन्होंने जस्ट दे हैव ट्राइंग टू वॉच के 5 years में, 10 years में, 15 years में कितना चेंज आया. ठीक है, इस वाई एक्सिस पर आपके पास म्यूटेशंस हैं रूट से डिसेंडेंट टिप्स जो है एंड नोड से वहां तक कितना म्यूटेशन रेट रहा है. यू कैन जस्ट सी दिस इज एन एक्सपोनेंशियल coverage, so you can see that कि exponentially rate पर आपका mutation cause हुई है, या mutation है या वो evolutionary change है. ठीक है, so
this is all about today's lecture. Now you can just try out these all commands to run on your our software. You can also assess the quality of a phylogeny um, for neighbor joining, और इसी तरह आप UPGMA के लिए भी जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और these are the legends, स्कोर जो है इसकी क्वालिटी शो कर सकते हैं. नेबर जॉइनिंग आफ्टर कोलैप्सिंग वीक नोड्स, जो वीक नोड्स हैं उनके साथ वो कोलैप्स जो है डेटा हो गया है. मैक्सिमम पार्सिमनी फाइलोजेनीज है, आप लोग ये भी ट्राई कर सकते हैं, बट वी हैव यू जस्ट हैव टू द कॉन्सेप्ट कि आप इस इन इंस्ट्रक्शन से आप क्या काम कर रहे हैं. So you know the required packages, you know what is the data set, you know what is data set किस तरह का है, उसमें कितनी लेंथ है, सैंपल्स कितने लिए हैं आपने, अलाइनमेंट्स कितने हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं. और इसके अलावा आप जो भी ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो कौन सा मेथड है, डिस्टेंस बेस्ड फाइलोजेनीज है, ये सब मैक्सिमम पार्सिमनी मैक्सिमम लाइक्लीहुड के लिए भी कर सकते हैं. और उसकी डिफरेंट एनोटेशंस जो है वो आप देख सकते हैं, डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन हुई है. सो यू कैन ट्राई आउट दीज इंस्ट्रक्शंस for future use. Thank you.